Hello everyone. We will start with one question. So it will give you more clear idea about it. So this is a question from various universities past papers. So it's important. यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है जो x और y के फॉर्म में है. f is a function of x and y. और फंक्शन क्या है? ये जो फंक्शन that is given over here. And what we have to find is what we have to do is पॉइंट दिया हुआ है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर पॉइंट्स नॉट एट ओरिजिन, मतलब वो किसी और जगह है अदर देन ओरिजिन. Okay, so we have to just test the function whether it is lying, it's a maximum or minimum point is lying on any other point other than origin. So सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टार्टिंग जो करनी है वो गिवन फंक्शन के साथ ही करेंगे. So given function is if f is a function of x and y, so ये जो x क्यूब y स्क्वायर जो भी फंक्शन है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया. सबसे पहले तो उसको एक्सपैंड करते थे क्योंकि ये ब्रैकेट को हम निकाल सके, रिमूव कर सकते हैं. So I just multiplied this inside the whole bracket, so that it's a simple expansion. So we got this something here in 3 terms. So now as you remember the first test after this क्या करेंगे, हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स लाइक x and y. यहाँ पे है फंक्शन x and y का है, so यहाँ पे we will be differentiate partially with respect to x and y. उसके बाद हम उसको इक्वेट करेंगे ज़ीरो के साथ, सो दैट वी विल गेट सम वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई टू गेट द स्टेशनरी पॉइंट. सो फर्स्ट स्टेप होती है कि हमें उसको डिफरेंशिएट करना होगा. सो दिस इज़ द गिवन फंक्शन, सो वी विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. वी जस्ट कॉल्ड इट फॉर आवर रेफरेंस एज अ पी. सो आफ्टर डिफरेंशिएटिंग देन पार्शली मतलब वाई कॉन्स्टेंट रहेगा यहाँ पे बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होके 18x स्क्वायर वाई स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ पे भी वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट ही रहेगा एज इट इज़. एक्स रेज़ टू 4 का 4x क्यूब हो जाएगा. यहाँ पे वाई क्यूब विल बी एज इट इज़ कॉन्स्टेंट. x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर. सिमिलरली वी विल बी फाइंडिंग द डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y. तो सेम होगा उसी तरह से यहाँ पे एक्स स्क्वायर, सिंस वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स रह जाएगा कांस्टेंट, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा, वी विल गेट 12x क्यूब वाई. सिमिलरली वी विल बी डूइंग हियर, यहाँ पे एक्स रेज टू 4 कांस्टेंट रहेगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y. यहाँ पे सेम वे एक्स क्यूब विल रिमेन कांस्टेंट, वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर एंड एक्स क्यूब वैसे ही रह जाएगा. So simply we have differentiated given function with respect to x and y. Now we have to find rt and x square, s. Why? Because we have to find rt minus x square as well. So r क्या होता है? r given function हमें differentiate करना है 2 times. So del f by del x जो भी हमें मिला था यहाँ पे, ये जो del f by del x हमें जो मिला है उसे हम और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसको ये क्या हो जाएगा, 36 वी विल गेट इट 36x y स्क्वायर माइनस दिस 12x x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस दिस 6x y क्यूब. Similarly we will be differentiating this one with respect to y again to get del square f by del y square, which is nothing but the t value. This will be your r value. अगर हमें इसे और एक बार डिफरेंशिएट करते हैं with respect to y तो हमें वो मिल जाएगा. I have put it over here. So that will be value of t. This is something which we found it here. After taking out few common things, this will be something like this. Now after differentiating with respect to y, यहाँ पे मिल जाएगा हमें 12x क्यूब माइनस 4 raised to 4y. y नहीं आएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट टू हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, वो तो 1 हो जाएगा. सेम वे हियर s की वैल्यू जो निकालनी है वो होगी del f by del y को हम विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं. सो वी विल गेट समथिंग result after taking it common, we will get the final value of s.
सो दिस आर एस टी की वैल्यू हमें मिल चुकी है. अब हमें स्टेशनरी पॉइंट अभी भी पता नहीं है. दैट वी हैव टू फाइंड. हाउ वी विल फाइंड इट? वी नो द del f by del x, वी नो del f by del y. वी हैव टू सिंपली इक्वेट दैट टू 0. अगर हम उसे इक्वेशन जो हमने पहले निकाला था, दैट ओनली आई हैव यूज्ड इट हियर, del f by del x की वैल्यू और del f by del y की वैल्यू. Simply we have to equate it to 0 so that we will get some two equations. If I will shift this term to the right hand side, simply what I will get is 18 minus 4x minus 3y and this 12 minus 2x minus 3y. ये दोनों equation मतलब we can simplify this equation this way, and what we can do is we can simplify this. If you look at that, those are nothing but the simultaneous equations which we can solve it here. Simultaneously we can solve it, like subtracting we can do it. You can understand here both the terms, both the equation has this minus 3 minus 3y term. So if you do subtraction, we will change the signs. Change of signs will happen over here. So if you make a change of signs for second equation, then this will get cancelled. So simply what we will get is minus 2x and plus 6, which is equal to 0. So after simplification we will just get that x is equal to 3. So एक stationary point का एक coordinate तो हमें मिल चुका है, x का coordinate. Now simply if you will put that in the equation 1, यहाँ पे for your understanding मैंने यहाँ पे x equation 1 को यहाँ पे repeat किया हुआ है. If you keep x is equal to 3 value in this equation and we will simplify, you will get this value of in terms of y, so that after simplification you will get the y's value which is 2. Now हमें x की वैल्यू पता चल गई है, y की वैल्यू पता चली, तो कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता चले गए स्टेशनरी पॉइंट के. Now what we have to do is rt minus x square, s square we have to do it, because depending on what it gives, whether it is plus or minus or it's 0, we have to decide what further step we have to do it. So that's why we will be putting whatever we got for value of r. r में एक वापस एक बार याद दिलाऊं, r है वो डबल डिफरेंशिएशन है, del square f अपॉन del x square. उसकी वैल्यू हमने प्रीवियस स्लाइड्स में निकाली है. Then s square is nothing but double differentiation with respect to y, partial differentiation, और t भी हमें दिया हुआ है del f by del y का with respect to x, again differentiation करने के बाद जो मिलता है. I have substituted this value over here. So हमें उसके पता चलेगा कि ये value now given stationary point, after finding in the previous step we have found x and y coordinates of stationary point, which we got it as 3 2. इस 3 2 को हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे rt minus s square के whatever equation we got it here for rt minus s square. इसमें हम 3 and 2, wherever it is x we will put 3, wherever it's y we will put t, and then we will see that what you will get it. So it's obvious we are getting it positive result. So what we can do it, we will use the 3 and 2 coordinates and put it in the value of r. r is, I have written here whatever value we got it in the previous step for r, I repeated here, so that we can put wherever it is x we will put 3, wherever it is y we will put 2. तो मैंने यहाँ पे x की जगह 3 डाल दिया, y की जगह 2 डाल दिया, 2 square. Here also x is 3, so 3 to the 6. Same way, so we replaced x y with the 3 and 2. So we will get negative result of this. So since it's a negative, any value below 0, so this is a point where the maxima lies. So given function f of xy has a maximum value at point 3 2, which is like other than 0 0 or other than origin. So simple steps है जो हमें follow करना है. गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, उसको इक्वेट करना है इक्वल टू 0, सो दैट वी विल गेट 2 equations and we can simplify those, solve those equation
together to get one stationary point. स्टेशनरी पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई के पता चल जाएंगे. वो उसके बाद वी हैव टू फाइंड आर वैल्यू, टी वैल्यू एंड एस वैल्यू. हमें निकालना है आर टी माइनस एस स्क्वायर. आर टी माइनस एस स्क्वायर में हमें जो स्टेशनरी पॉइंट मिला है उसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं then you will get some result, either positive, negative. Then depending on that we have to take the further steps so that we will get the actual point where the maxima or minima lies. So those are the few steps which we followed it, and we have to follow it for all the questions. So if you go it clear, if you will go through all the slides, it will be more clear for you how to find it and how to follow the same steps over again. I hope this is clear for you. It's pretty easy concept because we have used it in 12th grade and even in 11th grade as well. So I hope it is clear. Thank you.